ओडिया चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करने को आदौ भूलिबेनी एवं अवश्य डाउनलोड करंतु Adda247 ऐप। Adda247 रो ओडिया चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करने को आदौ भूलिबेनी एवं अवश्य डाउनलोड करंतु Adda247 ऐप। A very good morning to all of you. मु सुष्मिता मोहंती स्वागत करुच्ची आमर यूट्यूब चैनल Adda247 ओडिया को। Yes, very good morning to Babali, Chinmay, Aishwarya. Good morning to everyone. I wish you all are good. So hopefully, yes, Sachin, good morning. Good morning. Okay, so exactly, I just hope all of you have shared the link with your friends. निजो friend circle रे share करिन your link so that बाकी भी हमको join करि परिबे as soon as possible. Yes, Anil. Good morning. So let's start from today's quote. So today's quote is: our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always try just one more time. तो मोस्ट ऑफ द टाइम आमको लगे ना कि हाँ एबे एते सारा डिफिकल्ट सिचुएशन अच्छी किंबा हाँ आमे फेलियर हे गलु एट टाइम हे पारलानी और 2 टाइम्स वी हैव ट्राइड बट स्टिल आमे पॉजिटिव रिजल्ट पाइलनु तो सेते बेले लागे कि हाँ गिव अप कर दबा ओके बट एवरी टाइम रिमेंबर कि हे पारे सक्सेस हमहु सेति बेले मिलिबो जते बेले आमे आउ गोटे थरो अटेम्प्ट नबाट बा ट्राई करबा तो डेफिनेटली सब बेले निजो कि सेति पय मोटिवेट करबो कि till I get the success mu सब बेले आउ गोटे थरो ट्राई करबी ही करबी ओके so that is the best thing you can do for yourself now about the offer jodi कहबा then double validity of all product are available now so all the candidates जो भी candidates माने interested अच्छो बा कोनोसी product purchase करबा पे interested थिलो I would definitely suggest कि double validity period रे purchase करिनियो that would be very beneficial for you जेमति कि suppose Mahapack रो जेमति कि वर्तमान 6 months रा validity show करूची तो सेटा वर्तमान 6 plus 6 is equals to 12 months रा validity वर्तमान तुमको available हबो and best thing you can purchase in Mahapack कि तुमको बहुत सारा batches available होची जेमति कि district court रो batch available अछि सेतेरे सेक्रेटेरिएट एएस और बैच अवेलेबल अछि ठीक अछि हाई कोर्ट एएस और बैच अवेलेबल अछि तो जस्ट रिमेंबर हाई कोर्ट एएस और पूरा फुल कंप्लीट बैच सेतरे अवेलेबल अछि सेक्रेटेरिएट एएस और पूरा कंप्लीट बैच अवेलेबल अछि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बैच भी अवेलेबल हेजो ता सहित तमनको अदर्स बैचेस लाइक कांस्टेबल बैच स्टार्ट होइले सेटा भी तुमको अवेलेबल हेजो आरआई बैच एसआई बैच ऑलरेडी इंक्लूडेड अछि ठीक अछि ओएस बैच मध्ये इंक्लूडेड अछि ठीक अछि ओएस रो बैच मध्ये इंक्लूडेड अछि आरआई एसआई मध्ये इंक्लूडेड अछि so all the batches are included सेति पे गोटे सिंगल पैक परचेस करिवो 12 मंथ्स रा वैलिडिटी सहित एते सारा कोर्सेस अवेलेबल रहइबो लाइव कोर्सेस ता सहित टेस्ट सीरीज मध्ये ठीक अछि तो टेस्ट सीरीजेस मध्ये अवेलेबल रहउची सेति पे जो भी कैंडिडेट्स माने इंटरेस्टेड अछि आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि महापैक परचेस करनो दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू in the time of double validity re Mahapack purchase kariba definitely it would be a great offer for you okay so to purchase you can use my faculty code Y282 okay now let's continue today's first question yes Gayatri Janardhan Uddhav Madhusmita all of you good morning okay now this is the first question of today's session. In which year Negotiable Instruments Act came into force? Negotiable Instruments Act came into force. को वर्ष Negotiable Instrument Act टा forceful हेइथिला और आमे कहि परिबा स्टार्ट हेइथिला
Answer it all. Answer faster. जल्दी आंसर करो. एते समय गोटे क्वेश्चन आंसर पाई. Yes, 1882. Okay. So exactly Negotiable Instrument Act ta 1881 रो किंतु जदि फोर्सफुली कथा कहबा देन 1881 रे पास ऑन हेतिला किंतु इट वाज केम इनटू फोर्स ऑन मार्च 1st 1882. ओके सेति पई योर आंसर विल बी 1882 ऑप्शन बी. ओके एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कोटा जोटा कि हमें कहि परिबा नेगोशिएबल माने ट्रांसफरेबल. ओके तो ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट माने रिटन डॉक्यूमेंट्स ठीक अछि जोते देखि लाइक केते टाइम पीरियड पई तारो डॉक्यूमेंट अच्छी ठीक अच्छे तार मैच्योरिटी पीरियड केते तापई केते रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अवेलेबल तो ऑल डिटेल्स आर देयर ठीक अछि इन द रिटन ऑर्डर ठीक अछि तो गोटे रिटन डॉक्यूमेंट्स हमें कहि परिबा ठीक अछि रिटन फॉर्मेट रो डॉक्यूमेंट्स दैट इज द इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माने गोटे ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट जोटा कि माने टोटल मैच्योरिटी पीरियड रो डिटेल्स मेंशन करा जाय करी थिबो ठीक अछि. सो एग्जांपल रे आमे प्रॉमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज चेक्स ए सब कंसीडर करि थाउ. ओके सो दिस आर द ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट जोटा कि जण को ठू आ जण को पास ऑन मध्य करा जाय पारिबो. एंड रिमेंबर जे पर्यंत मैच्योरिटी पीरियड तार ओवर न हेची से पर्यंत एन टाइम्स ऑफ ट्रांसफरेबल करे माने ट्रांसफर हेई पारिबो माने जण को ठू आ जण को एन टाइम्स ऑफ ट्रांसफर हेई पारिबो. ओके जे पर्यंत तार मैच्योरिटी पीरियड over no hechu. Okay so that is the negotiable instrument. So answer is option B here. The negotiable instrument act ta pass on aitla 1881 re kintu came into force on 1882. Okay next what is the CD ratio in banking industries? CD ratio, full form of CD ratio. What is CD ratio? Cash deposit, credit debit, cash debt, current debt. What is CD stands? What happened all of you all are giving answers so late. Itte easy questions guda ko jodi itte late रे answer dobo then when we will discuss it. Answer it faster. CD ratio in banking industries, current debt, no, wrong. The answer is cash deposit ratio. Very easy questions and you are giving wrong answer. Cash deposit ratio. Okay. तबे cash deposit ratio कौन ना जेतबेले गोटे माने जे कोनसी कंपनी होगा बैंक हो ठीक है बैंक रो माने टोटल आमे कहि परिबा cash deposit ratio होची जेमति कि गोटे कस्टमर जेतिकी अमाउंट रो कैश डिपॉजिट करिछि सी बैंक रे तेबे तार अवेलेबिलिटी ऑफ माने अमाउंट को परसेंटेज आकार रे कोन रिप्रेजेंट करबा ठीक अछि टोटल डिपॉजिट्स ऊपर परसेंटेज आकार रे जो अवेलेबल अमाउंट को रिप्रेजेंट करबा जेमति कि सपोज होची सीडी इज 70% ऑफ अ बैंक सॉरी 75% ऑफ अ बैंक ठीक अछि माने कैश डिपॉजिट 75% गोटे बैंक रो सीडी रेशियो होची जदी 75% ता माने सेही बैंक रो टोटल 3/4 ऑफ अमाउंट कोन ना से लेंडिंग रे इन्वेस्ट करि सारिची. ओके सेति पई तारो सीडी रेशियो 75% आसुची ता माने जेति की डिपॉजिट आसीची गोटे बैंक को ठीक अछि ता ऊपर तार अवेलेबल अमाउंट रो जो परसेंटेज आकार रे अवेलेबल अमाउंट को रिप्रेजेंट करबा को सीडी रेशियो कहा जाय. ओके so the answer is cash deposit ratio. Okay so CD stands for cash deposit. Okay next M3 is the most important component among all money stock measures. So what is the common name of M3? M3 को as common name हमें कौन consider करता हो?
Broad money, very good. Yes, correct. So here the answer will be broad money, because as you all know आमे M1 एवं M2 को कौन consider करिताऊ narrow money हिसाब रे ना कि so then M3 एवं M4 जदि देखिबा then M3 को हमें माने broad money M3 and M4 को consider करिताऊ broad money. So majorly जदि use होता है broad money accordingly, so M3 majorly use करा जाता है as a money supply in India. ठीक अछि. So M यार अदर कंपोनेंट जेमती कि कुआगला करेंसी विथ पब्लिक जोटा को हमें कौन कह दो M1. ओके देन डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक्स माने M1 प्लस डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक्स. ठीक अछि एटा डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक्स प्लस M1 जदी करबा. ठीक अछि सेकंड कंपोनेंट देन दैट इज इक्वल्स टू M2. ओके देन टाइम डिपॉजिट जदी सेतरे ऐड ऑन हे गला. ओके माने M1 ने जदी टाइम डिपॉजिट हमें ऐड कर दूचे देन सेटा हमर कोन हे जिवो लाइक M1 रे टाइम डिपॉजिट ऐड हे जिवो. ओके करेंसी विथ पब्लिक विथ डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट. ओके तेबे सेटा कोन हे जिवो दा सेटा हे जिवो हमर M3. ओके जो थरे की टाइम डिपॉजिट ऐड हे गला किंतु जदी हमर टाइम डिपॉजिट ऐड ऑन होउची. ओके ता सहित टाइम डिपॉजिट माने टोटल M3 जोटा कि हमर डिमांड डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट रहिला माने करेंसी विथ पब्लिक टाइम डिपॉजिट एवं प्रत्येक प्रकार डिमांड डिपॉजिट्स विथ द पोस्ट ऑफिस सेविंग्स आल्सो. ठीक अछि त माने डिमांड डिपॉजिट सहित पोस्ट ऑफिस रो सेविंग्स भी जेतेबेले ऐड हे जबो दैट विल बी इक्वल्स टू M4. तो जोटा हमें चारटा कंपोनेंट देखि थाउ ना एठी जो तीनटा कंपोनेंट देछि तो करेंसी विथ पब्लिक जोटा कहूचे सेटा M1 रे कंसीडर करा जाय. M3 कोटा है जिवो ना जोटारे की हमें डिमांड डिपॉजिट्स एवं टाइम डिपॉजिट सहित करेंसी विथ पब्लिक को ऐड करि दबा. ठीक अछि M2 कोटा है जिवो ना केवल डिमांड विथ माने जो हमर M1 सहित डिमांड डिपॉजिट्स विथ बैंक जेतेबेले ऐड कर दबा. ठीक अछि तो दिस आर द कंपोनेंट्स ऑफ मनी हमें जोटा कहूचे मनी सप्लाई इन इंडिया. किंतु जनरली मोस्ट मेजरमेंट मनी सप्लाई इंडिया रे हेता है M3 जोटा को हमें ब्रॉड मनी हिसाब रे कंसीडर करते हो. M1 M2 को हमें कौन कंसीडर करते हो नैरो मनी. ओके नेक्स्ट इन कॉन्टेस्ट विथ द बिजनेस एंड बैंकिंग व्हाट इज CRAR. CRAR stands for, you can simply say CRAR stands for. What would be the full form of CRAR? Option C, credit to risk assessment ratio. Option D, wrong answer. Capital to risk asset ratio. Okay, so capital to risk asset ratio, that is the CR माने AR. Okay, so exactly CRAR माने आमे जोटा कहैतो एठी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंशन करा जाय छै. सो एक्जेक्टली देखो CRAR और आमे एटा को CAR मध्ये कहैतो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो. ठीक अछि सेति पई ही एठी मेंशन करि छी. ओके सो एक्जेक्टली CAR कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बा कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो जोटा हमें कहूचे. तो सेटा केमिति मेंशन करा जाय ना जो रिस्क वेटेड एसेट्स को हमर करंट लायबिलिटी गोटे बैंक रो करंट लायबिलिटी सहित जो रेशियो डिटरमाइन करा जाय माने हमें कहि परिबा करंट लायबिलिटी डिवाइडेड बाय द रिस्क वेटेड एसेट. ठीक अछि तो से जो रिस्क वेटेड एसेट कोन ना जते बेले गोटे कोनोसी बैंक माने तारो लोन प्रोवाइड करछे लाइक गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड करते माने तारो रिस्क अछि 0% किंबा जदी कोनोसी होम लोन्स किंबा अदर लोन्स प्रोवाइड करछे देन सेठी तारो रिस्क लाइक
सपोज 30%, ठीक अच्छे। तो ये जो रिस्क तार रोचे द रिस्क वेटेड एसेट सहित तार करंट लायबिलिटी रो जो रेशियो डिटरमाइन करा जाए दैट इज नोन एज द कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो। ओके, तो कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो को भली भाबरे डिटरमाइन करा जाए ना करंट लायबिलिटी को डिटरमाइन माने डिवाइड करा जाए विथ द रिस्क as weighted assets सहित। so that is equals to the current capital adequacy ratio बा आमे ताको कहि दो capital to risk asset ratio। okay, next, if a commodity has more number of substitutes the demand for this commodity will be, जदि कोनोसी कमोडिटी रो बहुत सारा सब्स्टिट्यूट्स अछि, सब्स्टिट्यूट्स माने जेमति कि हमें कहि परिबा गोटे कमोडिटी हमें यूज करूचे ना तो तारी भली अदर्स कमोडिटी आर आल्सो अवेलेबल इन द मार्केट, जेमति कि हमें चाहा यूज करूचे ता बदले रे कॉफी भी यूज करूचे। ओके, सो दिस आर द सब्स्टिट्यूट्स कमोडिटी। ओके, तो बस हमें तो कहि थाउ सब ये सब्स्टिट्यूशन गुड मध्य को आ जाए। तो एग्जैक्टली एठी को आ जाय कि जदि गोटे कमोडिटी रो बहुत सारा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स अछि तेबे तार डिमांड, ओके, कमोडिटी रो डिमांड कोन हबो, अधिक इलास्टिक हबो, लेस इलास्टिक हबो और इनइलास्टिक हबो किंबा परफेक्टली इलास्टिक हबो, कोन हबो? परफेक्टली इलास्टिक माने हमें कोन कहि परबा जेति की डिमांड सेति की सप्लाई। ओके, लेस इलास्टिक, more elastic, less elastic hobo। okay, no, the answer will be more elastic। remember जदि कोनोसी commodity रो substitutes अछि माने मार्केट रे आमे जानि जे एटा नहले आरोटा थिबो, आरोटा नहले आउ गोटे थिबो, ठीक अछि। तो माने तार डिफरेंट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स अछि ताले से भली कमोडिटी रो बहुत अधिक डिमांड रहता है। ओके, so exactly we say high elastic। okay, so exactly more elastic hobo एटी आंसर। so substitute goods अर्थ जेमति कि मु ऑलरेडी एग्जांपल दे साची कि टी एंड कॉफी हमें कहि परिबा घी एवं एडिबल ऑयल, जदि घी नाही घिओ नाही तले हमें आउड एडिबल ऑयल को यूज करूचे। so exactly that type of goods जोटा कि हमें गोटे जदि न पाउचे तेबे तार बदल रे अदर commodity are available। okay, that type of commodity are available, तार substitute commodity are available। so exactly in place of that other commodity is available। okay, तो सही जिनसटो को हमें substitute goods कहूचे। तो जेते तार substitution रहिबो, जेते type of substitutes अछि गोटे commodity रो तो तार elastic सेते अधिक थाए। तो highly elastic हुआ जाए तो more elastic will be the answer here। okay, so normally which of the following date of a month is observed as customer day in Indian banks on which the branch heads or officials are available to hear the redress customer grievances। तो exactly गोटे मंथ रो एभली गोटे डेट थाए जो दिन की एवरी माने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आर अवेलेबल और हेड ऑफिशियल्स आर अवेलेबल थांती कि कस्टमर को कोन ग्रीवेंसेस अछि ताकू सुनिबा पाई। ओके, सो ऑन व्हिच डेट मंथ रो को डेट रे से माने अवेलेबल थांती? Which date? 7? No. The answer is 15th। okay, month रो 15th रे माने 15 तारिख दिन जो डेट टा और हमरो इंडियन बैंक्स पई फिक्स कर दिया जाय छी कि ए डेट रे प्रत्येक हेड ऑफिशियल्स अवेलेबल रहिबे कि कस्टमर को कोन ग्रीवेंसेस अछि, कोन प्रॉब्लम्स अछि किंबा किछि भी प्रकार रो माने कंप्लेंट्स हो, ठीक अछि सुनिबा पाई, ठीक अछि। सो एक्जेक्टली तारो कंप्लेंट्स कस्टमर को कंप्लेंट्स किंबा कोनसी ग्रीवेंसेस को सुनिबा बा सॉल्व करिबा पाई से माने अलाउ करिथांती कस्टमर्स को कि से माने मीट करि परिबे टू द टॉप ऑफिशियल्स एंड ऑन द डेट ऑफ 15th ऑफ एवरी मंथ। ओके, प्रत्येक मंथ रे 15th रे। ओके, नाउ नेक्स्ट, with which of the following the fiscal policy is related to? तो या भितर कहा से तो फिस्कल पॉलिसी रिलेट करि पारछु ओपन मार्केट ऑपरेशंस, चार्जेस सॉरी चेंज इन रिजर्व,
requirements, the liquidity adjustment facility किंबा taxation and government spending. Fiscal policy कहा सहित आमे relate करि परिबा? A very simple question. Okay. आमे paid class रे fiscal policy related discussion करथले. Yes, very good Prince. Yes. So exactly आमे fiscal policy विषय रे पढ़ी थिले paid class रे. So what I have explained कि fiscal policy is that जोटा कि हमारा country रो expenditure and revenue को represent करता है. Yes or no? So exactly fiscal policy गोटे structure जोटा country रो गोटे estimated structure. So fiscal policy is an estimated structure of expenditure and revenue of the country. Yes or no? So exactly expenditure and revenue means the taxation is one of the income or revenue of our country. Okay, and government spendings. So definitely fiscal policy relate kaha ko abo taxation एवं government रो spending सहित relate करिवो because fiscal policy is a structure जोटा कि represent करिथा the country's expenditure and revenue. So exactly taxation and government spendings are related to that. So answer will be option D. Okay. Now next. Who among the following was the chairperson of the expert committee which suggested consumption expenditure for identifying the BPL? So exactly expert committee रो chairman किए थिले जे कि suggest करिथिले consumption expenditure माने BPL रो identify करिवा पई consumption expenditure को determine करिवा जरूरी बोली suggest करिथिले. Okay, so से जो consumption expenditure ता जानिबा पई okay किए suggest करिथिले? Who was the chairman? The answer is option D. Sandhya Rani. Yes, correct answer Sandhya. So yes, the answer is option D. Suresh Tendulkar. Okay, so Suresh Tendulkar suggest करले consumption expenditure जो माने गोटे goods एवं service गोटे household जेती की consupt करूची ठीक अछि goods किंबा service को जेती consupt करूची ठीक अछि तो से consumption expenditure को कौन कैलकुलेट करबा पाई सजेस्ट करथिले सुरेश तेंदुलकर जे कि एक्सपर्ट कमिटी रो चेयरमैन थिले एट दैट मोमेंट. ओके, सो एक्जेक्टली तांकर मेन कौन थिला कि मेन ऑब्जेक्टिव बा मेन मोटो कौन थिला कि गोटे हाउस होल्ड पर एनम जदी 11,000 रु कम माने कौन इनकम सोर्स अच्छी तेबे से बीपीएल रो आइडेंटिफाई रे आसीबो ठीक अछि. तो एक्जेक्टली सेथि पई ही एक्सपेंड जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करबार सजेशन दिया जायतिला कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर आमे कैलकुलेट करबा सो दैट पर एनम जदी कहार कंजप्शन एक्सपेंडिचर 11,000 पर एनम रु कम होची बा आमे कहि परबा इनकम ठीक अछि इनकम थ्रू ही हमर कंजप्शन केति के एक्सपेंडिचर होउची ठीक अछि. तो से वैल्यू ता आमे कंसीडर करि परिबा सेति पई जदी कोनोसी फैमिली रो पर एनम 11,000 रु कम इनकम अच्छी तेबे ताकू बीपीएल अंडर आइडेंटिफाई करा जिवो बोली कंसीडर करा जिला माने बिलो पॉवर्टी लाइन. सो एक्जेक्टली कंजप्शन एक्सपेंडिचर suggestion was given by Suresh Tendulkar. Options D. Next. Which among the following agricultural product is India's main import item? The pulses, oil seeds, edible oils and sugar. को product है India रो main import item हिसाब रे जाना जाए.
oil seeds, sugar, oil seeds, sugar. A or D? Prince the A or D? Okay. So the answer is option C, edible oils. Okay. So exactly edible oils Suchi, amo India ro largest import farm because yara production बहुत कम. Okay. Ebong consumption is very high. Okay. So because this commodities consumption is high and production is low, that's why this is a very essential commodity हमें कहते in our country. Okay. So in terms of import, এটা सबडू बेसी इंपोर्ट वाला प्रोडक्ट एडिबल ऑयल्स एवं ता सहित इंडिया रो मेन इंपोर्ट्स रे हमरो आउरी एड ऑन प्रोडक्ट्स आर मिनरल फ्यूल्स एवं ऑयल्स एंड वैक्सेस दैट्स द बिटुमिनस सब्सटेंसेस. Okay, so these are the main imports of India which provides 27% of total imports रो 27% केवल एई प्रोडक्ट रु ही इंपोर्ट करा जाय. Okay. So many a times we read in the financial newspaper about the term progressive tax system. तेबे progressive tax system विषय जो statement दिया जाय छी, read it properly and say which one is true or correct. Okay. Or both are true. Am I audible now? एबे buffer होनी दो. So question number 10 रो answer कौन हबो? Question number 10. So progressive tax is harsher on the poor section, so it is false. Because progressive tax कौन ना progressive tax होची एभली tax जोटा कि main objective तार थिला कि rich को ठारू high amount of tax collect करिबा एवं poor को ठारू low amount of tax collect करिबा. Okay, so exactly सेथि पई progressive tax poor को ऊपर harsher tax बोले हमें कहि परिबानी. So this is wrong. Okay, then second one कोन कोची progressive tax average rate of tax रु कोन marginal tax rate माने progressive tax गोटे एभली tax जोतरे कि average tax rate ता marginal tax rate ठारू कम ही आसीबो. Okay, so yes exactly it is true because progressive tax रो अर्थ आमे माने exactly जानि छे कोन कि गोटे higher proportion माने income source जहार थिबो ताठू अधिक amount of tax in माने सेठी जनरेट करिबा. ठीक अछि एवं एभली टैक्स जेमति कि लग्जरी टैक्सेस. ठीक अछि तो लग्जरी आइटम ऊपर अधिक टैक्स जोड़िबा बेसिक नेसेसिटी ऊपर कम टैक्स जोड़िबा सेति पई कुआ जाय कि मार्जिनल टैक्सेस ठारू मध्य आमे एज कंपेयर टू जदी कहबा एवरेज टैक्स तारा मार्जिनल टैक्स ठारू कम रहबो. ओके, सो सेकंड वन वाज करेक्ट एंड फर्स्ट वन वाज रॉन्ग. ओके, next. Economic planning comes under which of the following? Economic planning comes under which of the following list? को list under economic planning टा आसे बा consider हुए. को list under economic planning consider हेता है. Karthik, then you just leave the studies. तमे पढ़िबा छाड़ी दियो इकोनॉमिक. जदि आमे कहबा कि इकोनॉमिक रो कॉन्सेप्चुअल एते क्वेश्चन आसुनी कोनोसी एग्जाम रे आसुनी कि ए एग्जाम रे आसुनी कि से अदर एग्जाम रे आसुनी बट इकोनॉमिक इज अ पार्ट ऑफ एग्जाम. सो हमरो जदि पांचटा भी क्वेश्चन आसुची देन वी हैव टू लर्न एवरीथिंग. एंड जदि आमे कहबा अदर एग्जामिनेशंस को भी जदि देखिबा देन मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन एवं रे कोन जीएस पोर्शन रो एवरी
सब्जेक्ट ठीक अच्छे से जियोग्राफी हो से हिस्ट्री हो से पॉलिटी हो ठीक अच्छे बा इकोनॉमी हो तुम जहाँ भी पढ़ ना सबू सेक्शन रु आमर 15टा क्वेश्चन कि 20टा क्वेश्चन आसुनी से एवरी सेक्शन रु आमर 7-8 क्वेश्चंस अराउंड ही आसुची ओके दैट डजंट मीन आमे कहबा कि आमे टोटल पाठ पढ़िबा छाड़ी दबा सेमती करिले तो तुम पाठ ही पढ़ी परिबनी ओके सो इट्स कॉमन सेंस ना कि आमे माने को पढ़िबा तो निहाती भाबे जरूरी जदि हमको एग्जाम क्लियर करिवार अछि. So economic planning comes under which of the following list, that is concurrent list. Okay. So concurrent list is the answer because जदि हमें कुछ economic planning तेबे economic planning माने कौन गोटे economically activities को represent करा जाए कि planning करा जाए तापाई कि total economic activity कौन रहिबो कंट्री रे हमरो केति की lendings अछि केति की borrowings अछि केति की interest payments अछि ठीक अछि तो whole planning केति की income रही परिबो revenue in आसी परिबो केति की expenditure दरकार हबो so every planning को ही economically planning हमें कहि परिबा तो economic planning बा activity को गोटे plan बनेबा हमरो total social हाउ बा specific social किंबा economic outcomes को जोटा represent करिवो ठीक अछि that is our economic planning तो ए planning ता हमरो गोटे matter of subject of concurrent list जोटा कि Indian constitution रो 7th schedule रो concurrent list रे matter of subject हिसाब रे consider करा जायता है economic planning को okay so your answer is concurrent list option B. In which year Public Debt Act was passed? Public Debt Act को वर्ष पास हेतिला ऑप्शन डी सुब्रत पूछने ऑप्शन डी 1948 okay anyone else? The answer will be option C 1944 okay so public debt अच्छा सुन माने प्रिंस पचार दउछंती आफ्टर इंडिपेंडेंस और बिफोर ताले सेही अनुसार तमे ईयर टा को माने गेस करिथांदा ना कि तो बिफोर हेतिले सेही भलिया आंसर देथांदा आफ्टर कहितिले 1948 देथांदा ना कोन okay so answer is 1944 okay so public debt कोन ना जेमति कि टोटल अमाउंट जोटा कि गवर्नमेंट बोरो करिछि बा गवर्नमेंट ऊपर लायबिलिटीज क्रिएट करूछि ठीक अछि तो गवर्नमेंट ऊपर लायबिलिटीज क्रिएट करबा एवं गवर्नमेंट बोरो करिवार जदि सोर्सेस देखिबा ता माने हमें कोन गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स यूज करी किरी किंबा कोनसी एक्सटर्नल असिस्टेंस लाइक आमो कंट्री रो आमो कंट्री अदर कंट्री रो कोन बोरोइंग करूछि ठीक अछि थ्रू दी ट्रेजरी बिल्स हो किंबा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को यूज करी किरी ठीक अछि कोन मनी बोरो करिबा so every type of debt बा liabilities जोटा गवर्नमेंट रो liabilities बा debt को short term borrowings को सबु कंसीडर करा जाए as the public debt okay so public debt is the debt of government जोटा कि गवर्नमेंट रो debt हिसाब रे कंसीडर करा जाए बा गवर्नमेंट रो borrowings जोटा कि डेवलपमेंट एक्टिविटीज हो किंबा गवर्नमेंट रो जो बजेट ठीक अछि डेफिसिट को मध्य समटाइम्स कोन हुए कि कंट्री रो जो एक्सपेंडिचर अधिक हो जाय था एवं इनकम लेस हबा सहित जो डेफिसिट कंडीशन को ओवरकम करिवा पई बा मैनेज करिवा पई मध्य गवर्नमेंट डेब्ट माने कोन बोरोइंग करि थाए ओके बोरो करि थाए मनी सो दैट गवर्नमेंट बा पब्लिक डेब्ट हिसाब रे कंसीडर करा जाय सो हियर द आंसर इज ऑप्शन सी कि 1944 रे यारो एक्ट होजी पास होनेतला ओके नेक्स्ट so before go to the next question let's discuss about the Mahapack so I have already said कि Mahapack रे almost till now 14 live courses with test series are available ता सहित
केवल सेतिकी नुहे वर्तमान डिस्ट्रिक्ट कोड मध्य सेतरे एडेड अछि ठीक अछि सेक्रेटेरिएट एस और 2.0 मध्य सेतरे इंक्लूडेड अछि ठीक अछि ता सहित जो भी कैंडिडेट्स माने अदर्स क्लासेस लाइक जॉइन करबा पई चाहूचो इंडिविजुअली देन इंडिविजुअली भी जॉइन करि परिबो किंतु जदी महापैक परचेस करिया पई इंटरेस्टेड अछो तेबे सेटा मध्य परचेस करि परिबो बिकॉज़ 14 लाइव कोर्सेस टेस्ट सीरीज सहित अदर्स कोर्सेस जोड़ा कि एबे लॉन्च होउची एवं स्टार्ट हबो मध्य आगो को जेमति एआरआई आगो को स्टार्ट हबो त सेटा मध्य सेतरे इंक्लूडेड रहइबो कांस्टेबल बैच स्टार्ट हबो त सेटा मध्य सेतरे इंक्लूडेड रहइबो तो दिस ऑल बैचेस आर अवेलेबल इन अ सिंगल पैक एंड द मोस्ट इंपोर्टेंटली डबल वैलिडिटी ऑफर वर्तमान वैलिड अछि माने अवेलेबल अछि सो यू कैन यूज दैट ओके you can use my faculty code Y282 to get that offer. Thank you. Now, next. So this is the next question. Consider the following statements. Statement को भलो भाबरे पढ़ो. That is Mumbai interbank offer rate. Overnight money market rate हिसाब रे केबे लॉन्च माने कहा द्वारा लॉन्च करा जायतला. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा लॉन्च करा जायतला बोली फर्स्ट स्टेटमेंट रे दिया जायछि. So is it true? मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट को एज अ ओवरनाइट मनी मार्केट हिसाब रे मार्केट रेट हिसाब रे लॉन्च करा जायतिला बाय द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. Both of them are true. Okay, Singham Kochanti, both are true. Okay, so no. Let me tell you, the answer is only 2 is true because eta Bombay Stock Exchange द्वारा नुए NSC द्वारा हेतिला, that is National Stock Exchange. Okay, so मिबोर जोटा कि मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट गोटे बेंचमार्क रेट हिसाब रे कंसीडर करा जाए फॉर एवरी एग्रीमेंट हो डिबेंचर्स हो किबा टर्म डिपॉजिट्स रो रेट पाई गोटे बेंचमार्क रेट हिसाब रे कंसीडर करा जाए. इट इज ट्रू किंतु मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट को ओवरनाइट गोटे मनी मार्केट रेट हिसाब रे लॉन्च करा जायतिला बाय द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. सो दैट first one ta wrong hegala ebong second one ta correct habo. Okay, so your answer will be option B, only 2 is true. Okay, by the NSC, not the BSC. Okay, next. In which year nationalization of SBI subsidiaries took place? SBI ର subsidiaries ର nationalization को वर्ष हेतिला? नाइनटीन 1955. So the answer is 1959. SBI ର subsidiaries took place on 1959, not 55. Okay. तो एक्जाक्टली जदि आमे कहबा तारो जो टोटल 7टा सब्सिडियरीज बैंक नेशनलाइज हेतला जेमति कि से 7टा सब्सिडियरीज बैंक कोन ना स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर. ओके, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, ओके, एंड स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर. ओके, सो दीज आर दी ऑल माने बैंक्स सब्सिडियरीज बैंक ऑफ एसबीआई जोटा कि नेशनलाइज हेतिला on the or in the year 1959. Okay, next.
So question number 15, option B. Okay, Bharat Financial Inclusion, very good. No, Village Boy Ravi, wrong answer. The answer is option B actually, because Bharat Financial Inclusion gote non-banking financial institute ba company ame koi pariba. ठीक अछि. So it is not a scheme. Bharat Financial Inclusion is not a scheme or a project. कोनोसी government scheme ba project नुहे. एटा गोटे non-banking financial company. सेतिपाई जोटा कि IndusInd Bank सहित merge हेई सारिछि. Okay. So exactly the answer is option B. Which among the following is not an instrument of qualitative control in India? Regulation of consumer credit, rationing of the credit margin requirements, and variable cost and reserve. Option D, very good. Very good, Sri Chandan. Yes, option D would be the answer, variable cost and reserves. Because आमे जदि कहूचे qualitative तेबे एई सबुतक qualitative under माने qualitative control रे consider करा जाए, but variable cost and reserves किंबा आमे कहबा SLR, CRR, OMO माने open market operations. Okay, these all are the instruments of quantitative control in India. Okay, किंतु regulation of the consumer credit किंबा rationing of the credit, margin requirement माने होची कोन हमर टोटल क्रेडिट सिस्टम को अफेक्ट करे नाही, सेति पई ही हमें ताकू माने कहबा qualitative control measures. Okay, so these are the measures of qualitative control. किंतु हमर variable reserves, cost and instruments एटा कोन हमर obviously credit system को अफेक्ट करी थाए. Okay, सेति पई ताकू quantitative control in India रे consider करा जाय, India रो quantitative control रे consider करा जाय. So open market operations, CRR, bank rate, SLR, variable reserves and cost, these all are the instrument of quantitative control. Okay, next, which among the following defines the net interest income? Which one is the net interest income? No, little have given the correct answer. Yes, Asirvad Swine, very good. Yes, the answer is option D, difference between the interest earned and interest paid. जेतिकी गोटे कंपनी बा बैंक इंटरेस्ट अर्न करी थाए एवं जेतिकी इंटरेस्ट पे करूची, तार जेतिकी लोन्स अछि बा लायबिलिटीज अछि ता पई से जेतिकी लोन पे करूची इंटरेस्ट पे करूची, ठीक अछि, जेतिकी लोन अमाउंट ता ऊपर अछि ता पई से जेतिकी इंटरेस्ट पे करूची एवं जेतिकी इंटरेस्ट से अर्न करूची. लाइक गोटे बैंक गोटे अदर माने पब्लिक को कोन इंटरेस्ट देइची. ओके, सो इंटरेस्ट देइची माने से कोन सॉरी लोन देइची, तो लोन देइची माने कोन इंटरेस्ट पाइबो. सो एक्जेक्टली जेतिकी लोन देइतिबो ता ऊपर जेतिकी इंटरेस्ट से अर्न करूतिबो. ओके, इंटरेस्ट अर्न करबा एवं जेतिकी इंटरेस्ट पे करबो. इंटरेस्ट कहा ऊपर पे करिवो ना, ऑब्वियसली जेतिकी लोन से आनीथिबो, जेतिकी लोन आनीथिबो ता पई जेतिकी इंटरेस्ट से पे करूची एवं जेतिकी इंटरेस्ट से अर्न करूची ता भीतर रो डिफरेंस रे जहां ताको प्रॉफिट मिलुची, दैट इज नोन एज द interest income, net interest income. Okay, so your answer is option D here. The provisions related to promissory notes have been incorporated in which among the following acts? Okay, I think I have already discussed it in the first question. Promissory notes have been incorporated with which among the following
act को act under a promissory note relate करूची we have discussed it now you should answer it fast ओडिया पिला ऑप्शन डी all of the above सबुतक एक्ट रे promissory note consider होची 3 option B Indian Partnership Act very good Ashirbad yes correct so and in the first question we have already discussed about the negotiable instruments act okay तेबे negotiable instrument act जोटा कि हमें कहि दउ 1881 रो ठीक अछि तो 1881 रे negotiable instrument act पास हेतिला एवं इफेक्टिव हेतिला 1882 रे ठीक अछि तेबे से negotiable instrument act अंडर रे हमें promissory note को as an example discussion मध्य करिचे okay so negotiable instrument माने जोटा गोटे written instrument of transferable okay the transferable instrument तो जोटा कि ट्रांसफर करा जाय परबो वन टू अनदर ठीक अछि तो promissory note is one of the example of that ठीक अछि जोटा जणन कोठू आउ जणन को पास ऑन करा जाय परबो ओके सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अंडर ए promissory note को कंसीडर करा जाय व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ आरटीजीएस ट्रांजैक्शन इन इंडिया So what would be the answer? No limit? Very good all of you. Yes, exactly. So RTGS transaction रे कोनोसी limit not थाए. Okay. So तारा minimum limit जदि हमें देखिबा तले माने amount to be remitted through minimum limit is 2 lakh किंतु तारा upper limit is no limit. Okay. So no maximum limit are there. That's why RTGS transactions रो no limit होगा. Yes, the answer will be option D. Very good. The real time gross settlement. So, which among the following correctly denotes the primary deficit? Primary deficit को correctly quota represent करिबो. Yes, Madhusmita, correct. RTGS no limit. Now, last question. Which among the following correctly denotes the primary deficit? No, Babali, Prince, Bonalata. Okay. So, here the answer is fiscal deficit minus the interest payment. ठीक अछि remember चारिटा प्रकार deficit हमें पढ़िताउ generally okay so one is revenue deficit जोटा कि revenue expenditure minus revenue receipt को कहा जाए revenue deficit then हमें पढ़िताउ budget deficit okay then fiscal deficit and last one is primary deficit तेबे primary deficit कोना ना जेति की fiscal deficit हमर आहारिबो ठीक अछि तो से fiscal deficit रू हमर कोन interest payment को minus कर देले जो amount determined हुए ठीक अछि that amount is known as the primary deficit amount ठीक अछि so budget कोना ना total expenditure minus total receipt okay total expenditure minus total receipt is the budget deficit तो जोटा कि सेतेरे total receipt रे कोना ना borrowings included थाए okay budget deficit रे total
रिसिप्ट रे बोरोइंग्स भी अमाउंट बोरोइंग अमाउंट भी इंक्लूडेड थाए माने कंट्री जेति की अमाउंट बोरो करजी से भी इंक्लूडेड थाए किंतु फिस्कल डेफिसिट कोन बाहरिबो ना टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू किंतु से रेवेन्यू रे बोरोइंग अमाउंट कैलकुलेट हबो नाही एथरे इंक्लूडेड बोरोइंग अमाउंट ओके बजेट रे किंतु फिस्कल रे एक्सक्लूडेड बोरोइंग अमाउंट ठीक अछि एवं प्राइमरी डेफिसिट रे कोन ना फिस्कल डेफिसिट जेति की बाहरिबो से फिस्कल डेफिसिट रु जेति की हम कंट्री इंटरेस्ट पेमेंट करछि से इंटरेस्ट पेमेंट अमाउंट को माइनस कर देबा परे जो अमाउंट डिटरमाइन होबो दैट इज आवर प्राइमरी डेफिसिट ओके सो द आंसर विल बी ऑप्शन डी हियर ओके So these are all about for today. Now let me tell you about the upcoming batches because mu already Mahapack bisare sabu candidates मानू inform करी सारी okay but till now जदि कोनोसी भी candidate Mahapack पाई interested ना हो तेबे कोनोसी सिंगल पैक परचेस करबा पानी चाहूछो तेबे देयर आर सो मेनी अपकमिंग बैचेस जोटा कि हमर बहुत सारा अपकमिंग बैचेस सबुड प्रथमे तो मु कहबी सेक्रेटेरिएट एएसओ विषय रे जोटा रे कि सेकंड बैच हमर स्टार्ट होबा जाउथि 27th ऑफ सितंबर को ठीक अछि एवं ता सहित हमर वर्तमान ऑलरेडी हाई कोर्ट एएसओ रो गोटे क्रैश कोर्स वर्तमान कंटिन्यू चली छी 13th रे ओनली स्टार्ट हेची ठीक अछि देन नेक्स्ट आमनंगर आहुरी अपकमिंग बैच दैट इज ओएस पाई गोटे बैच स्टार्ट होची जो भी कैंडिडेट्स माने ओसीएस रो प्रिपरेशन करूछो बा करिबा पई इंटरेस्टेड अछो ओसीएस रो 1 ईयर रो गोटे पूरा कंप्लीट बैच स्टार्ट होबो जाउची ठीक अछि 1 ईयर पाई ठीक अछि टोटल 1 ईयर पाई कंप्लीट बैच इज गोइंग टू स्टार्टेड ऑन 18th ऑफ अक्टोबर ठीक अछि अक्टोबर स्टार्ट होबो तो जो भी कैंडिडेट्स माने इंटरेस्टेड अछो प्रथमे डिटेल्स चेक करिवो थ्रू दी अड्डा ऐप ठीक अछि ऐप थ्रू रु जाओ किंबा adda247.com रे सर्च करो देन ओडिसा रो एग्जाम्स जोन को सिलेक्ट करो तापरे पूरा ब्रीफ डिटेल्स चेक करो ओके डिटेल्स व्हाई बिकॉज दैट्स वेरी इंपोर्टेंट कि तमे पर्टिकुलरली को बैच रो रिक्वायरमेंट रखुछो पर्टिकुलर से बैच रे तमरो केति की आवर्स रो क्लासेस प्रोवाइड करा जाउची कोन सब्जेक्ट कवर करा जाउची प्राइस स्ट्रक्चर कोन अछि एई सब डिटेल्स चेक करिनियो प्रथमे चेक करिबा परे जदी तमे इंटरेस्टेड अछो देन you can purchase with my faculty code Y280 okay so thank you everyone don't forget to like the session and also share with your friends okay I just hope you all have enjoyed the session so don't forget to like okay thank you have a very good day all of you thank you